Good morning to you. This is Arvind Kumar Jha, teacher of Gyan Bharti Public School, Laxmisagar, Darbhanga. Today I am going to teach you about a chemical equation in chemistry in chemical reaction for class 10th. Today, first of all, we want to deliver about what is chemical reaction. Then we can deliver about chemical equation. Chemical reaction, it is needed to know about chemical reaction. What is chemical reaction? There are so many definitions about chemical reaction, in which one definition adds when two or one or more than one chemical substances come into action due to some circumstances, then they produce one or more than one chemicals. This is known as a chemical reaction. And any chemical reaction can be delivered, can be observed, can be shown by in words, such as if we tell about a chemical reaction, that how zinc react with sulfuric acid. When sulfuric acid poured on the granules of zinc, then it is known, then it produced so many products as zinc sulfate and hydrogen. In this way, if we tell it in words, it becomes longer, it becomes large to write on the board or on copy. So it feels difficult for time taking. So many time taken for writing these equations. So they adopted some types as known as chemical equation. In chemical equation, any chemical reaction write in short ways. In short way means छोटे तरीके से इसको लिखने के तरीके क्या, तो इसको बड़े को छोटे में परिवर्तन करना और तब दिखाना कम समय लेगा, कम समय लगे इसलिए इसको दिखाने का तरीका। तो वह केमिकल इक्वेशन को उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है, दिखाया जाता है, उसके इस रूप में जो केमिकल सिंबल्स सब्सटेंस का और केमिकल फार्मूला एज ए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं जो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये एरो जिंक सल्फेट and H2 hydrogen gas. Hydrogen gas. It is the chemical reaction which shows that in words. And if we indicate it as a symbol and formula, then it is known as a chemical equation, because equation means two sides. One side equal to the another side. This is known as equation, as algebraic equation. Similarly, in chemistry, it is known as chemical equation. It is a left side and it is a right side. In left side, we write reactants, and in the right side, we write products. So, and it is separated by equal sign or arrow sign.
So it is known as a chemical equation. Here, if we write in symbol or formula Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2, it is known as chemical equation. Here, zinc Zn, symbol of zinc Zn, and formula of sulfuric acid H2SO4, and formula of zinc sulfate ZnSO4, and formula of hydrogen gas H2 written in this way. And so it is known as a chemical equation according to definition. Now come to the point that what we know about chemical equation. यदि ये केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है तो इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? ये केमिकल इक्वेशन यदि सीधे कहीं लिखा हुआ है तो उससे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है Zn plus H2SO4 एरो ZnSO4 plus H2, तो इसको देखने से हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन रिएक्टेंट है। पहले लेफ्ट साइड में क्या है तो वह रिएक्टेंट हुआ। रिएक्टेंट के रूप में कौन कौन है? तो Zn जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये बात की जानकारी मिली। प्रोडक्ट के रूप में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है, ये जानकारी मिली। सेकंड, जो H2SO4 जैसे है तो यह एक मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करता है। H2SO4 ये सीधे लिखा हुआ है, जिसमें कौन कौन से ये कंपाउंड है यह भी इंडिकेट करता है, यह भी जानकारी मिलती है। जो H2SO4 जो है वह क्या है? कंपाउंड है। क्यों है कंपाउंड? तो जब ये एक से अधिक एलिमेंट्स इसमें कंबाइंड है केमिकली, वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, H है, S है, O है, तो यह कंपाउंड हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट और कंपाउंड मिल करके क्या बना रहा है? तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, यहाँ कंपाउंड बन रहा है और एक हाइड्रोजन बन रहे हैं, ये एलिमेंट के रूप में। तो इस तरह से हम यह ऑब्जर्व किए। साथ ही साथ हमें यह भी ऑब्जर्व होता है जो इसमें हाइड्रोजन H2SO4 जैसे है तो इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम इसमें कंबाइंड है और इस तरह से कंपाउंड बना, तो यह भी ऑब्जर्व होता है। सिमिलरली इस साइड भी ये ऑब्जर्व होता है। यहाँ यदि एलिमेंट है तो इसमें 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यह भी ऑब्जर्व होता है। तो इस तरह से हमें क्या क्या जानकारी इससे मिलती है? व्हाट वी नो अबाउट द गिवन एनी इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल, इफ वी टेक Mg plus O2, 2MgO here similarly we know that Mg magnesium and oxygen, 2 elements combined and it produces magnesium oxide. According to observing the reaction equation, we know that 2 atoms of Mg and 1 molecules of oxygen combine and form 2 molecules of magnesium oxide. Here also we know that 2MgO2 and 2MgO, here it is a balanced chemical equation. So we know about a chemical equation, these things what we tell you. Next, what this equation which information we do not obtain, इस इक्वेशन से हम कौन ऐसी चीज है जो नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमको मालूम नहीं हो पाता है, यह भी हमें जानना है। जो कोई इक्वेशन यदि लिखा हुआ है जैसे ये लिखे हुए हैं, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ Zn plus H2SO4 ZnSO4 plus H2, तो इसमें हमें क्या जानकारी ऐसी है जो हमें नहीं मिल पाती है, इसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या सुधार है, ये जानना भी जरूरी है। जैसे यहाँ जो इस तरह से लिखे हुए हैं, इसका दूसरा नाम
इस तरह से यदि लिखा हुआ है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, यदि यह इक्वेशन है तो इससे हमें जानकारी क्या नहीं मिलती है? तो हमें जानकारी नहीं मिलती है जो Zn किस स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है, क्या है, यह जानकारी नहीं मिलती है। ये H2SO4 है तो यह किस तरह का है, एसिड, डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, यह भी जानकारी नहीं मिलती है। यह जो प्रोडक्ट बना वह किस स्टेट में है, यह भी जानकारी नहीं मिलती है। ये H2 है तो वह गैस में है कि सॉलिड में है कि लिक्विड में है, यह भी जानकारी नहीं, यानी इसमें स्टेट की भी जानकारी नहीं मिलती। दूसरी बात यह भी नहीं कि वो किस सिचुएशन में ये रिएक्शन हो रहा है, यह भी जानकारी नहीं मिलती। इन दिस वे what we do not know about the given equation, so there is some needed some remedy, जो इसमें रेमेडी क्या होनी चाहिए जिससे हमें मालूम हो जाएगा। तो इसमें रेमेडी में एक रेमेडी यह है जो सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L के रूप में और गैस के लिए G के रूप में लिखा जाता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस को ऐसे इंडिकेट किया जाता है। सिमिलरली प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट है, इसको एरो डाउनवार्ड के रूप में भी लिखा जाता है। गैस को अपवार्ड एरो के रूप में भी लिखा जाता है। तो इस तरह से यदि एसिड है तो एसिड को यदि कंसंट्रेटेड है तो कौन ऐसे करके लिखे जाता है। यदि वह डाइल्यूट है तो यह डाइल्यूट ऐसे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। सिमिलरली यदि यह सिचुएशन है जो हीटिंग किया जा रहा है कि क्या, तो यहाँ पर हीट लिखा जाता है या फिर टेम्परेचर लिखे जाते हैं जितना डिग्री सी, जितना डिग्री सी हुआ। यदि हीट ऑब्टेन्ड हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस हीट इंडिकेट करने का। तो इस तरह से which information we do not obtain if we write it in this way with the chemical equation, then we remedy these errors. Next, if the reaction taking both sides, then it is known as reversible reaction. It indicated by this sign, reversible reaction. And for example, reversible reaction, NH4Cl NH3 plus HCl. This is example of a reversible reaction also. Here the sign of reversible, the sign of the given here on the place of arrow or equal, it indicates that the reaction taking both sides. Now come to the next point. How can we remedy them? Then we can explain it in this way. We can remedy what we know, what we do not know about the given equation. Then we correct in this way. This is known as remedy. In this way, we can observe that any chemical equation can be written in this way, and what we know about chemical equation and what we do not know about chemical equation. Next, for next day, I shall explain about the chemical equation, how chemical equation can be balanced and why it is needed to be balanced. Thank you.